Once again, a warm welcome to those of you who have joined us just for this session. Thank you. It speaks volumes about the fact that you are indeed interested in this future outlook that we are talking about. Gold and precious metals, a future outlook, that's the name of our topic. To introduce all our speakers and to take you ahead, I'm going to hand over to the editor, New Jeweler International Media Group, Mr. Ananthanarayanan Subramaniam. Thank you very much. Indeed, a warm welcome to everybody here because we are today not planning but definitely going to witness the future outlook of gold, silver and other precious metals, which is penultimate, very important for the industry today. And we thank GJEPC and IIJS Bharat Signature for giving the opportunity to bring in national and internationally known speakers today, acclaimed speakers today, to take us through the perspective that gold and precious metals will take in the future. It gives me immense pleasure to introduce our industry heads, specialists and experts who will be guiding us, who will be deliberating and discussing on the subject of gold, silver and precious metals and taking us to a logical conclusion today. Ladies and gentlemen, a big hand for IIJ's Bharat Signature for having put up this important subject during this show. Thank you very much. Our first speaker, he's the National Secretary of 106-year-old India Bullion and Jewellers Association, IBJA, since 2012. Mr. Surendra Mehta is a qualified chartered accountant from 1988 batch. Mr. Mehta is also Precious Metal Advisory Committee at IFSCA, Government of India. He has in-depth knowledge of gold ecosystem and has delivered more than 500 lectures on gold policy, hallmarking, bullion exchanges, etc., and gold-related regulation. A key person for having an idea about gold monetization scheme and sovereign gold bond. Mr. Mehta is on Product Advisory Committee of all the commodity exchanges. He represents the government on behalf of IBJA for all national issues related to gold and has played a key role in getting IBJA benchmark rates approved with Reserve Bank of India and Ministry of Finance. A regular in media channels, giving his viewpoint on movement of gold, his opinion is widely sought by leading national and international media groups. Mr. Mehta is also on the steering committee in World Gold Council for setting up Bullion Exchange and Bullion Bank. IBJA has set up its offices in 31 states under his able leadership. He has also played a key role in implementing OECD guidelines. Ladies and gentlemen, a big hand to Mr. Surendra Mehta. Welcome, sir. Our next speaker, Mr. Ranjit Singh, is the Head of Business and Product Development at the India International Bullion Exchange, IIBX, in GIFT City. Ranjit Singh is a seasoned financial industry leader with over 24 years' experience. Mr. Singh is recognized for his ability to drive business growth through expert product strategy, end-to-end product lifecycle management, and the development of high-value strategic partnerships. A specialist in exchange-traded products, he combines deep knowledge of product and project management with a commitment to bringing innovative products to market while maintaining strict adherence to industry regulations and best practices. Ladies and gentlemen, Mr. Ranjit Singh. Welcome, sir. We have the Iron Lady among the men here, Ms. Shweta Danak. Shweta Danak is the Director and Head of Vijay Exports Mumbai, Mumbai's leading manufacturer and exporter of RUCOS, rose-cut and unset open-setting diamond jewelry. She has an excellent understanding of design, production, and global B2B markets. She plays a pivotal role in shaping the brand's creative direction, expansion, and growth. She's also a luxury jewelry trainer, providing retailers and their team training on important subjects. Let's welcome Mr. Shweta Danak to give her perspective on the precious metals and the impact on jewelry manufacturing. Ms. Danak, please welcome. We have with us today Mr. Tirupati Rajan, who's traveled all the way from Madurai. He's the Managing Director of Goldsmith Academy. Tirupati Rajan is the founder of Goldsmith Academy, Madurai. He is the 6th generation entrepreneur to head the business of traditional art of jewelry making. His motive in initiating Goldsmith Academy is to train and update goldsmiths in modern techniques of jewelry making. Mr. Tirupati Rajan, welcome. Ladies and gentlemen, a big hand.
We have with us Mr. Shivanshu Mehta, who's the Senior Vice President and Head Bullion at MCX. He's an invitee on behalf of the IIJ's Bharat Signature to be on the panel. Under his leadership, MCX pioneered several industry-first innovations, including the world's first deliverable 1-gram gold contract, India's first gold and silver options contracts, and the MCX Good Delivery norms for BIS-accredited Indian gold refiners. He has also played a significant role in the design and launch of the India International Bullion Exchange, contributing to its early strategic and business framework. Ladies and gentlemen, a big hand to our invitee, Mr. Shivanshu Mehta, MCX. Ladies and gentlemen, it's very important to navigate through speakers, especially speakers who are experts, who are speakers who are industry heads with a very, very wide experience in their sectors. We invite Mr. Chirag Sheth, Principal Consultant, India Metals Focus. Chirag has over 21 years experience in precious metals, working for UBS and Latin Manharlal Commodities, and regularly features on business news channels in India. Chirag holds a bachelor's degree in management and a postgraduate degree in management and finance. He is on the product advisory committee of the NSE, IIBX, MCX, and BSE. Ladies and gentlemen, proud to have Mr. Chirag Sheth moderating the session today. Thank you very much, sir. I leave the discussion open now. Focus on the metals trajectory, focus on the direction that the precious metals will be taking. And today, we are creating history here by giving a perspective of what will be the gold rates. That's my first question. And ladies and gentlemen, to you. Thank you very much. Good afternoon, everybody, and thank you to GJPC and New Jeweler for this opportunity. We've got a wonderful panel out here, mix of people. 2025, if you look at, has been an interesting year for precious metals. Gold and silver both have done phenomenally well. In fact, they have been one of the best performing asset classes. And while I'll not go into what they have done, but just highlighting here what has driven this fantastic performance in both gold and silver. So if you look at gold, essentially, while in India we love this concept of de-dollarization, however, it's essentially been central banks which have driven the rally in gold prices, but also to some extent helped by Donald Trump and the US policy. Essentially since the Ukraine-Russia war, US dollar was weaponized, which has helped gold to some extent. Silver has had its own fundamentals. In fact, silver fundamentals for last 4 or 5 years have been very, very robust. Silver market has been in deficit, and now we've seen silver kind of catching up. So the idea today is to look at what do we expect in both gold and silver, but also then to have a panelist, kind of dwell into each aspect of the market that they cover. So let me just first very quickly run through each of my panelists to see how are they seeing market over the next probably year or so. What is it that one factor that they see in the market standing out, one factor that they worry, what keeps them up at the night? Probably Surendra, I'll start with you. What is that couple of things that you think 2026 people should be focused on? Well, for the benefit of all the audience, can I speak in Hindi? See, we'll have to understand, हमें एक चीज समझनी होगी कि गोल्ड का जो बिजनेस है वो ज्वेलरी वाले ये सोच रहे हैं कि गोल्ड उनकी वजह से ही चलता है, उनकी वजह से ही ऊपर जाता है, उनकी वजह से ही नीचे आता है. लेकिन गोल्ड का डिमांड सप्लाई से कुछ लेना देना नहीं है. डिमांड सप्लाई ज्वेलरी में आती है, ज्वेलरी में घटती है. आपको लगता है अभी डिमांड कम है तो प्राइस कम हो जाएगा, डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. और ये हिस्टोरिकली आपने देखा होगा कि कोविड के समय भी डिमांड कुछ भी नहीं थी, सारी दुकानें बंद थी, लेकिन गोल्ड का प्राइस ऊपर था.
तो समहाउ द एंटायर इंडस्ट्री जो है वो बिजनेस कर रही है, ज्वेलरी इंडस्ट्री, जो मटेरियल सेंट्रल बैंक भी बाय करते हैं, ईटीएफ बाय करते हैं. तो गोल्ड प्राइस आर बेसिकली मूव्ड बाय सेंट्रल बैंक एंड ईटीएफ. और यदि कोई भी कमोडिटी का प्राइस इन्फ्लेशन से 10 टाइम्स बढ़ता है तो आप ये समझ लीजिए आपकी इंडस्ट्री की हालत बुरी होने वाली है, बुरी होगी, और उसको कोई नहीं रोक सकता. यदि आपकी सैलरी पिछले साल मान लीजिए 50 लाख रुपए थी और आपकी सैलरी 20% बढ़ रही है तो आपकी सैलरी 60 लाख होगी. लेकिन अगर गोल्ड का प्राइस पिछले साल 1 लाख था और इस साल 1,50,000, तो आपकी सैलरी इज गॉन अप बाय 20%. The general inflation index has gone up by, say, government declared inflation is gone up by 7-8%, but price of the commodity is going up by 50% or 70%. In that case, ये जो factors हैं, ये factors आपकी demand को poor रखेंगे in 2026 also. So यानी सुरेंद्र भाई आपको डिमांड की चिंता हो रही है कि डिमांड शायद क्योंकि भाव इतना बढ़ रहा है तो सस्टेन नहीं होंगे. ठीक है, बिल्कुल. उस पे हम आएंगे डिस्कस करने की. मैं ज्वेलरी की डिमांड की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट डिमांड की बात नहीं. ऑफ कोर्स. रंजीत, आईआईबीएक्स किस चीज पे फोकस कर रहा है? अगर आप पहले ऑडियंस के बेनिफिट के लिए बताएं कि आईआईबीएक्स है क्या और कैसे ऑडियंस यहाँ पे जो लोग हैं, एग्जिबिटर्स है या जितने भी विजिटर्स आए, वो आईआईबीएक्स को कैसा यूज कर सकते हैं. Thank you, Chirag. Hindi, English, जो हिंदी, इंग्लिश, व्हाट वुड यू प्रेफर? इंग्लिश, हिंदी, whatever audience preference What- I can talk. एनीथिंग इज फाइन. या यू कैन डू अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. ठीक है, चल I'll do it right. See, IIBX has been set up. The reason behind setting up an bullion exchange in GIFT IFSC is to make this exchange as a primary gateway to import gold into India. Right now, it is still not the primary gateway. There are a lot of other channels which have been open to import gold. I can go to nominated banks, I can go to nominated NC. If I'm an exporter, if I have advance authorizations, I'm SEZ exporters, I've been permitted by DGFT and RBI to import directly, right? See, when we launched this, it has gone live in the year 2021 in the month of July. It is inaugurated by our Prime Minister, Mr. Modi. He set on a target that IIBX, India is a price taker now. Surendra Bhai also knows it, that we still a price taker because the one way of gold is one way. When I say one way, it's like only you can import gold bar, but you don't have permission to export gold bar. If you have to export, you have to do a value addition in the form of anything. Once you import, you have to pay duty 6%, 3% GST, so it not become viable to export also. See, when we launched, our focus was to make an online platform where you, as a qualified jeweler or TRQ holders, can buy gold either in kilogram of 915 purity, either 999 purity 100 gram bars also. See, all the transaction which are resulting on IIBX is in the dollars per troy ounce. And domestically it's traded in INR terms, but when you trade on IIBX, it is all in dollars per troy ounce mein hota hai. Then other benefits which we are providing to TRQ holders, basically suppose there is a IGCR rule, it's called import gold at concessional rate. Whenever you buy gold on IIBX, the IGCR rule is exempted. So you don't have to comply with the IGCR rule under TRQ. I think most of the people who does import, they understand TRQ is basically a tariff rate quota. It's an agreement, bilateral agreement between Government of India and Dubai UAE government, that any gold which is coming, originating from UAE, will have a 1% duty concession compared to gold which is coming from other countries. Right now, just a few days back, on 2nd Jan, our regulator IPSCA has came up with various regulation to support, apart from QG and TRQ, any entity which are based in SEZ can import gold, so under QGFM. So that is one development which has taken place. Second development which has taken place on that circular same I'm discussing is that advance authorization. When I say advance authorization का मतलब होता है जिसके पास exporter है, DTA वाला है, वो ये use that advance authorization to get the gold at duty free using advance authorization license, I can export the jewelry. So that is also permitted to
Another advantage which you have on buying on exchange platform is that the price of visibility. Price visibility रहेगा आपको कि किस price पे आपका trade हो रहा है, right? Second visibility है कि you can go up to 100 grams also. जो एक sample test हुआ था because this was never tested for advanced authorization. जो sample test हमने किया था to find out how it works on systems and everything, we did it only with 100 grams. कोई आपको 100 grams बाहर नहीं देगा except bullion trailer. अगर आप बैंक से जाओगे या एजेंसी के पास जो 100 ग्राम कोई माल आपको देता है, हम एक्सचेंज पे वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, राइट? वी प्रोवाइड LBMA बार, वी प्रोवाइड UEGD बार्स ऑल्सो. राइट नाउ वी आल्सो लॉन्च है 49 कॉन्ट्रैक्ट, जो 49 किलो बार जो कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं, वो भी हमने लॉन्च किया है. अनदर थिंग विच वी आर लॉन्चिंग इज दैट 400 ट्रायंस, लार्ज बार जो होते हैं, जो सेंट्रल बैंक्स होती हैं बेसिकली, दे बाय दैट लार्ज बार गोल्ड बार्स ऑल्सो. These are few development which has taken place on IIBX. So anything? essentially just to summarize, IIBX एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप अगर मैन्युफैक्चरर हो, रिटेलर हो, तो आप डायरेक्टली गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं. आज जैसे अगर आपको गोल्ड इंपोर्ट करना है तो आपको बैंक के थ्रू जाना पड़ता है. इफ़ यू फुलफिल अ सर्टन नेटवर्थ रिक्वायरमेंट तो आप IIBX के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हो. और अगर आपने TRQ कोटा है जो इंडिया UAE सेपा के अंडर जो TRQ है, अगर वो कोटा में आपके पास कोटा अलॉट हुआ है तो वो भी आप IIBX के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हो. श्वेता मैम, आई वांट टू कम टू यू. एक चीज़ जो पूछना चाहता हूँ कि पिछले 2-3 साल में जो गोल्ड की प्राइस में रैली आई हुई है, ठीक है, हाउ हैव यू एज अ मैन्युफैक्चरर अडेप्टेड टू इट? आपको क्या चेंजेस मार्केट में दिखाई दे रहे हैं? So very good afternoon first everybody, and I was very amazed when I was invited for this stage because all the bullion heads and the IBJA heads and everybody is sitting here, and as a manufacturer I'm supposed to talk about this. But yeah, thanks for this question. And last 2 years have been not easy for anybody. Everybody had been, as a jeweler, having a lot of challenge in what we should cater, how we should cater, how we have to reduce the weight, how we have to match up with the customer demands, whether there are customer demands or not. So there were a lot of ifs and buts. So too much of unpredicted scenario was there in the jewelry industry. But I guess somewhere or the other, gold rising constantly and consistently has given a strong boost and a motivation that gold is something which is not going to be like a normal commodity anymore or an asset anymore. It's going to be as a valued material in our life. How future is that the barter, how it's going to take place in future is gold is going to be a barter. And gold is now not only in India, not only in one, gold is everywhere around the globe. So I'm sure the gold market and the demand of it is never going to go less. Yes, the challenge is how to make sure that you penetrate into this market, how you penetrate into the industry, how you give something different to the industry, and how the customers get their counter sales, how my clients can get the counter sales is what is our goal. So consistent effort of balancing and having a perfect congruence of not only designing or innovation, but also with the technology, also with holding on the Indian craftsmanship, because we are into a fusion of technology and artisans. So we also have to take care about our Indian artisans. If we are only going to go towards technology, what will our artisans do? And India being known as generating the maximum beautiful jewelry around the globe. Now we are also matching up with the global standards. We are also working on with adopting technology. Like initially we used to have machines which were only catered by few of the manufacturers. Now manufacturers are putting an investment, importing, like every time jewelry is only imported or gold is imported. Now we have statistics which is also proving that technology has been also been imported the max in India, where it's a proof that Indian technology, jewelry technology is also growing with manufacturers. So I think all the manufacturers have to play a very strategic ideology towards how we can retain and sustain that gold jewelry and jewelry industry is and can have a great future only if you upscale, upgrade, and constantly thrive into the market of knowing by researching what is exactly what is needed as per time. Since last 2 years, changes happen very fast. And if we also don't match up with that pace,
I guess then it's going to be difficult. But that challenge surely is going to be there because unpredictable market, unpredictable global scenario, we also cannot predict it. But what we can do is the utmost keep ourselves motivated for sure, as we have to do it, we have no other choice. And we have to keep understanding and upgrading the system, upgrading the technology Okay. for sure. Before I come to Shivanshu, if I can just first ask Mr. Rajan, Mr. Rajan, you are a sixth generation, yes. gold jeweler, right? How, and especially because you're focused on artisans, right? How difficult it is now been for the artisans, given the fact that gold prices have gone where they have gone to do business, and what is it that you guys as Goldsmith Academy are focusing on? So thank you. So first of all, I say I am the faculty for the Bureau of Indian Standards, and also I am the person for the MSME department also. We are mostly dealing with the consortium for the artisans. Okay. So with this experience, now tier 1 goldsmiths are migrated, tier 2, tier 3 now booming. So recently, after the rate fluctuation, the tier 2, tier 3 goldsmiths are getting more order from the customers. Only challenge is these goldsmiths are getting the bullion, local vendors. They are saying 99.5, but when we are taking the work and we are going for the HOD, but the bullions, that's the purity is at 99.2, 99.3. So these are very challenge for our tier 2, tier 3 goldsmith. So lack of standardization is a big challenge. Because the gold bullions, dealers are focusing on the tier 1 only. So tier 2, tier 3 now more business happening because we are doing R&D also. Last 5-6 months now, example me as one of the customers jewelry we are doing. So now we are getting more orders from the wedding jewelry. So many things we are getting. Only thing, the bullions we are getting from the local vendor is not in a correct purity. So this kind of challenge, and also iridium. And now government is giving a more training program for the removal of iridium also. But we are getting challenges because involving with iridium, that hallmarking center actually is not in the process. So now we want to upgrade from that iridium, and so many things are there, sir. Sure. Okay. Mehtaji, I would like you to respond later on this, but Shivanshu, you sit in the middle of the market, right? Essentially, MCX is one of the most important entities in terms of market infrastructure, right? Given what gold and silver both have done and the amount of volatility that we've seen over the last few years, how can manufacturers, retailers actually participate in the exchange? And whether is it important for them to participate in the exchange given what prices have been doing? Because we often tend to hear, "Arey, MCX में trade नहीं करने का पैसा टूटता है." No, I think very valid earlier what you said are very valid points. So I mean, just to share with the audience, MCX is one of the globally leading exchanges where gold and silver is traded, and it's a matter of pride for all of us that an Indian exchange has gold and silver futures which are ranked at number 2 or number 3 globally by the number of contracts that are traded. So essentially, like Chirag said, the role of a commodity exchange is basically to provide a risk management platform via the derivative contracts, futures and options for the bullion traders, for the jewelers, for the refiners, for the entire bullion value chain. And which is no surprise that over the past 2 decades, today you see the MCX gold and silver prices as a domestic price benchmark. When people go and walk into a jewelry store, they seek a reference of the MCX prices. It's very important in times like this because when they say that volatility is the only certainty, right? So when there is going to be tremendous price volatility, your fabrication margins for jewelers cannot compete with that kind of a base price movement, right? Gold can fluctuate from $4,300 to $4,500 and vice versa much sooner than the cycles of conversion of bullion to jewelry take place these days. And those days are gone when a jeweler used to treat the in-house, in-store
inventory as some kind of a asset class which is only going to appreciate and appreciate. It may appreciate, but the point is, for best accounting practices, you need to value inventory. If you are going to go public, you need to have a risk management policy. Over the past 1 year or so, or 2 years, you may have seen so many different jewelry companies who are mid-rung, who have gone public and who have raised public money. So their risk being managed is a very important aspect for their valuation. And for any small, medium jeweler, large jeweler, listed jeweler, they are all prone to the same price movements. So the exchange provides a hedging mechanism so that your margin remains protected and insured. You pay an insurance premium, you buy a put option. Whether the gold prices go down or up, you are immune to that. So this mechanism comes into effect on a commodity exchange like MCX is one. The second important aspect, Chirag, in today's time is to give an organized asset for the retail, because the retail interest is booming as the prices are going. They need to be armed with a quality assured product which is exchange delivered with no counterparty risk, with an assay certificate, and which comes with the ease of accumulation electronically and the ease of holding it electronically, where the liquidity of the exchange provides for multiple price points during the day, during the life of the contract, and you can take the physical delivery, you can hold it, like I said, electronically, accumulate it, etc. So all these aspects, arming the retail investor with organized asset class and arming the jeweler or the bullion trader with very potent, effective risk management tools. This is what we see happening. And we have seen, Chirag, just to share with you the numbers, today we are maybe futures and options put together. We may be doing around 290,000 crores per day of a turnover, which may be more than 4.5 times over the last year. So which means that more and more jewelers are embracing this mechanism to come and give up the risk actually. सुरेंद्र भाई, आपसे दो चीज़ों पे मैं व्यू चाहता हूँ. सबसे पहले जो राजन सर ने कहा, क्योंकि आप इंडिया बुलियन और ज्वेलर्स एसोसिएशन के नेशनल सेक्रेटरी है, वो कह रहे हैं कि टियर 2 और टियर 3 में 995 के बदले 992, 993 प्योरिटी के सोना मिलता है. तो क्या करना चाहिए एक छोटे आर्टिसन को, किस तरह से बुलियन डीलर के साथ काम करना चाहिए और ये इश्यूज कैसे रिजॉल्व हो सकते हैं? देखिए, ये इसलिए 995 की जगह पे 994.5 या 4.3 या जो भी कुछ गोल्ड मिलता है, उसका रीज़न ये है कि लोगों को सस्ता चाहिए. आपको सस्ता चाहिए तो सस्ता मिलेगा, उसमें प्योरिटी नहीं होगी. BIS ने क्लियर कट इंडिया गोल्ड के गुड डिलीवरी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, जो इब्जा के साथ मिलके BIS ने काम किया. चिराग वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट वर्क. सो आप BIS अप्रूव्ड बुलियन डीलर से ही या रिफाइनर से ही आप गोल्ड बार खरीदें, उनके साथ ही काम करें, या सिर्फ इम्पोर्टेड ही खरीदें, उनके साथ ही काम करें. अगर आप सस्ता ढूंढने जाएंगे तो इस देश में गोल्ड वी आर प्राइस टेकर. हम कोई गोल्ड बनाते नहीं है कि मेरी कॉस्टिंग 5,000 होगी तो इनकी कॉस्टिंग 4,950 होगी. ऐसा हो ही नहीं सकता है. आप सस्ता ढूंढने जाएंगे तो आपको सस्ते में मिलावट के साथ ही सामान मिलेगा. तो आप BIS अप्रूव्ड रिफाइनर के पास जाइए, या आपको दूसरा तरीका बताता हूँ. इब्जा के पास एक 100 बुलियन डीलर जो वेरीफाइड टैग होल्डर्स है, उनकी लिस्ट है. आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से उनका लिस्टिंग देखिए और उनसे ही आप सामान खरीदिए. तो आपको प्योरिटी का अश्योरेंस मिलता है, प्योरिटी की गारंटी मिलती है. ठीक है सुरेंद्र भाई, आप आते प्राइस के ऊपर. ठीक है, हमने पिछले एक साल में काफ़ी सारे फैक्टर्स देखे. सेंट्रल बैंक बाइंग देखा, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिमांड देखी, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स देखे, जिसने गोल्ड को ड्राइव किया. 2026 में आपके हिसाब से क्या फैक्टर्स है जो प्ले आउट हो सकते हैं, और आप सोने में क्या रेंज देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम थोड़ा बैकवर्ड चलते हैं कि गोल्ड बढ़ा क्यों. आपको किसी दूसरी चीज में जब विश्वास कम हो जाता है तो आप गोल्ड खरीदते हैं.
जब आपका दूसरी चीजों में वापस विश्वास बढ़ेगा तो ही गोल्ड घटेगा, वरना गोल्ड घटेगा नहीं। मैं आपको इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, लोगों का विश्वास तोड़ने का क्या नतीजा होता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द ज्वेलर्स, जो डायमंड की ज्वेलरी का व्यापार करते थे, तो कस्टमर को कुछ सालों के बाद लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, तो कस्टमर लैब ग्रोन डायमंड पे शिफ्ट हो गया कि अगर मुझे नकली खरीदना था तो मैं लैब ग्रोन ही खरीद लेता। तो अगर आप नकली सोना बेचोगे, नकली प्योरिटी वाला काम करोगे, तो लोग वहां यहां से भी शिफ्ट होंगे। आज लोग सोना क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि आपका करेंसी पे विश्वास नहीं है, आपको लगता है डॉलर डूब जाएगा, आपको लगता है रुपी वीक होता जाएगा, आपको लगता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन रोज बढ़ रहे हैं। हम रोज एक नई न्यूज़ देखते हैं, फेड इंटरेस्ट रेट कट कर रहा है, नॉन फार्म पेरोल डेटा सही नहीं है, डॉलर इंडेक्स मजबूत नहीं है, यूएस बॉन्ड यील्ड के जो डेटा हैं, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो गोल्ड को ऊपर ले जाएंगे, वही फेवर कर रहे हैं। एंड देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, हम ऐसे 50 फैक्टर और डिस्कस कर सकते हैं। बट लॉजिकली आप ये समझ लीजिए कि 2026 में भी यही फैक्टर काम करेंगे, और जब तक वर्ल्ड में कहीं पर भी बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स नहीं होगा, तब तक गोल्ड के प्राइस बढ़ने वाले नहीं हैं, घटने वाले नहीं हैं। जब तक बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स नहीं होगा। 2008 में लेमन ब्रदर्स कोलैप्स हुआ था, उसके बाद सारे इक्विटी मार्केट नीचे आए। उस समय कोविड में हमने देखा कि जैसे पूरा इकोनॉमिक कोलैप्स हुई तो गोल्ड का प्राइस भी एक बार नीचे आया, तभी वो नीचे आएगा, लेकिन वो बहुत जल्दी तेजी से बढ़ेगा वापस। फिलहाल कोई बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होने वाला नहीं है, बिकॉज फेड इज कंटिन्यूसली pumping money in the banking system, whether it is American banks or even European banks are getting lot of money from the government. और इतनी जल्दी कोई कंट्री खत्म भी नहीं होती। हम भी पिछले 20 साल से रोज बोल रहे हैं पाकिस्तान खत्म हो गया, बैंकरप्ट हो गया, आज तक नहीं हुआ। बीच में आया श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया, आज तक नहीं हुआ। अभी भी लोग घूमने जा रहे हैं वहाँ पर। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। गोल्ड के प्राइस बढ़ते ही जाएंगे जब तक आपका दूसरी चीज़ों पे विश्वास नहीं बैठेगा, ये गोल्ड के प्राइस बढ़ते ही जाएंगे। 2026 में अगर आप मुझसे रेंज पूछते हैं, $4,900 to 5,100। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आपको दिखेगा कैसे रॉकेट की तरह प्राइस बढ़ते हैं। यस्टरडेज क्लोजिंग वाज अ सबसे खराब क्लोजिंग हुई है। फर्स्ट टाइम आफ्टर सो मेनी ईयर्स गोल्ड का स्पॉट प्राइस जो क्लोज हुआ वो गोल्ड के फ्यूचर से ज़्यादा है, $10 ज़्यादा है, विच इज़ एन क्लियर सिग्नल कि गोल्ड की फिजिकल डिमांड बढ़ने वाली है, इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ने वाली है। You know, मैम आई वांटेड टू आस्क यू, ना सुरेंद्र भाई सेड गोल्ड के दाम नीचे जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। अब एक चीज़ अगर हम नॉर्मली बात करें कि अगर इंडिया की आप एवरेज इनकम देखें, ठीक है, तो 3 लाख रुपए की एवरेज इनकम है, ठीक है, राइट। गोल्ड लोगों की सैलरी जैसे सुरेंद्र भाई ने कहा, और अगर आप डेटा भी देखें तो पिछले 3 साल में 19% से इंडिया की सैलरी बढ़ी हुई है, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, लोगों को नॉर्मल खाने की चीज़ों में दिक्कतें आ रही है, मोपेड्स बिकने रहे, टूथपेस्ट बिकने रहे, तो सोना कैसे बिकेगा? जैसे So as a manufacturer, yeah, so you know, are you not worried what is happening in the global market? No, we are very worried, and I think each and every manufacturer is worried. Each and every manufacturer is working really hard, and what pace I don't know, but what we are doing right now as a manufacturer and what manufacturers can do is they can really, and a lot of people are joining hands. How to, like as he mentioned, like hedging is been happening, and strongly I'm sure a lot of manufacturers must be doing, all the exporters must be doing, my husband does it religiously, that it is a must that we don't do losses, because we also have to work No, on all those cost things are cutting. fine. You know, these are great things to say that. I'm answering your question. But yes. So when we are seeing that or recession or maybe expense or maybe the market, like the commodity is becoming so challenging to buy, how will people invest in gold? Investment is something which you save and you buy. Investment is something which you believe and trust will definitely give you income tomorrow. Commodity is for your living. This is for your future. So people have created that mindset, and the customers and the buyers who come to us, they say that when people or the customers are walking in, initially the perception of buying was, the mentality of buying was कि अरे फंक्शन है चलो बाय करते हैं, इनका बर्थडे आ रहा है गिफ्ट करते हैं। अभी लोग आते हैं, सेविंग्स है
invest इसी में करते हैं. The ideology of the customers have changed. So when the buyers are also coming and buying from us, the point of view of calculation of how they're going to buy the product is different. And that's how, as a manufacturer, we'll have to put in our effort to understand the ratio of gold, diamonds, and color stones is how. In that, what is the buyback will the customer get, and what is the actual pay investment they are doing in gold. If the average is matching up with their expectation, they are ready to invest in gold because they think gold is an investment, not Yeah, as a but daily then commodity. I'm sure you're sure that the weights have gone Yes. down, right? Weights have gone down significantly. Significantly. Caratages have gone The down. carriage has gone down. The authority, like the accountability of that piece, like certification initially was not mandate. Now it's mandate. Hallmarking is mandate. Stamping is mandate. Like, you know, all of this, purity check. Now we ourselves have to start and do each and every piece XRF. We ourselves have to do diamond testing because our clients are doing, initially third party QC was not happening with all the clients. Now it is mandate that they are also wanting to give trust. Now Tanishq has always won hearts by trust. Other clients also are started doing the same. They also want to build trust because it's Sure. not just a commodity Sure, buy. sure. Mr. Rajan, I wanted to ask you, you focus on tier 2, tier 3 cities, right? What is happening in tier 2, tier 3 cities? How are consumers kind of reacting to the gold price? It's one way to say that there is trust in consumers, right, for gold. But if people don't have money, right, and discretionary spending is as it is reducing, then how are jewelers over there adjusting to all the new reality? So actually, tier 2, tier 3 goldsmiths are getting more orders. Sir said that we want to buy the gold bullions according to the Bureau of Indian Standards list is there. Everything sir saying. But my experience recently, I will give some reports to you also because IBJA president. One person is supplying to the bullions. When we check that 99.5 is there, but when we taking as a manufacturing work, again that bullion is become as a 99.2 or something difference. So we are again going to ask that bullion dealers. They are saying no, we have supplied, you have changed the metal SS also. So now what we are doing now? We are again giving some awareness program. Without disturbing that bullions, we can find out whether it is a 99.5 or some other things. So these are very much challenges to our goldsmith. And also another thing, sir, customized jewelry, we are doing the customized jewelry, unique designs. All the works are finished. And then QC also checked. When we are going to a HUD, again the process, we are getting some defaults. Sure, sure. रंजीत, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप एक एक्सचेंज हो जहाँ पे लोग डिलीवरी ले सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, क्या आज के टाइम पे जहाँ पे मार्जिन स्क्वीज हो रहे हैं, ठीक है, और अगर एक मिड साइज रिटेलर है या मिड साइज मैन्युफैक्चरर है, क्या ही इज बेटर ऑफ इंपोर्टिंग डायरेक्टली थ्रू IBX या आज भी बैंक या बुलियन डीलर से माल लेने में? Okay. See, anything which you buy on exchange, one thing we are sure about quality. Quality pigeon. Second question was that how far we are better than banks are buying through other agency, other channel which is available in the market. It depends on the premium discount which is prevailing in the market. See, one thing what has happened by getting into an exchange is you don't have to deal with the banks or nominated agencies. We are directly dealing with the supplier. That premium which basically the costing which banks or nominated agency add, that gets eliminated. So it's directly with the supplier. So he will offer you a better price compared to what other channels are giving you. So one thing is that part. Second, as I told you that as a TRQ holder, since अगर आपके पास TRQ नहीं है तो क्या करेंगे? See, अगर TRQ भी नहीं है तो गोल्ड जो अगर मैं डायरेक्टली इंपोर्ट कर रहा हूँ, हाँ, अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ with let's say 100 crore, 200 Yes. crores of top line turnover or Right, whatever, right. should I come to you? Obviously. See, reason is like you don't have to जब भी आप बाई करते हैं किसी चैनल के थ्रू, ये चैनल का कॉस्ट होता है, राइट? जो चैनल का कॉस्ट है हमारा कॉस्ट में बहुत कंपैरेटिव कॉस्ट है. We are far better than compared to what other channels are offering. One is that premium
कि एक सप्लायर जब बेचता है अपना सप्लायर प्रीमियम ऐड करता है, जो चैनल यूज़ कर रहा है वो अपना प्रीमियम ऐड करता है, देन देल बी ए कन्वर्जन कॉस्ट बिकॉज सिंस यू पेइंग इन रुपी, बट रुपी गेट एट लास्ट डॉलर में कन्वर्ट हो रहा है, जहाँ पे भाव काटता है कि डॉलर में क्या भाव काटा मैंने, तो उस भाव में आपको बेटर भाविंग मिल जाता है। सेकेंड एडवांटेज क्या होता है कि मान लो मैंने डॉलर सेंड किया, फॉर एग्जाम्पल आई गिव एग्जाम्पल, आई एम ए ज्वेलर, I send $1 to buy, since you have to give advance to IFBX, I have 11 days window period. If I think कि I don't want to go for taking delivery because मेरा जो order था नहीं आया, I have an option कि मैं gold buy नहीं करूँ। अगर मैं सेम किसी एजेंसी के थ्रू करता हूँ तो I have to oblige that order। अगर मैंने भाव काट लिया तो मुझे लेना ही पड़ेगा माल, वो ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है शिवांशु, एक सवाल जो मुझे आपसे पूछना था कि हम काफ़ी बार बहुत सारे ज्वेलर्स हमें ये फ़ोन करते हैं कि हमने माल बेच दिया पर काटा नहीं है, अब गोल्ड $20 ऊपर चले गया, $50 ऊपर चले गया, हम क्या करें। तो क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में ये फेस आ जाता है जब क्या है कि डिमांड भी वीक है, थोड़ा बहुत धंधा हो गया तो मैं रुक जाता हूँ, भाव नीचे आ जाता है, फिर मैं कवर कर लूँगा। ये सिचुएशन साल में 2-3 बार ज़रूर आती है और आई एम श्योर आपको भी बहुत सारे फ़ोन आते होंगे। ऐसे सिचुएशन में ज्वेलर ने क्या करना चाहिए? एक्चुअली क्या एक प्रॉपर मेथड है जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज ना आए? कि क्या MCX पे उन्होंने बेच के तुरंत ही MCX पे हेज कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए? और सुरेंद्र भाई मैं आपसे भी इसके ऊपर व्यू चाहूँगा। आई थिंक आपका एक ये बहुत अहम सवाल है, और सबसे पहली जो इसके अंदर चीज़ है कि नॉट हेजिंग इज़ बेसिकली स्पेकुलेशन, राइट? Because when you're not deciding against something, you're choosing it. कहने का जो मतलब ये है कि अगर आपने एक ऑर्डर आपको मिला एज ए ज्वेलर, आपका जो उस समय पर्पस है वो ये है कि प्राइस को फिक्स करना। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% कैपिटल बुक करके पूरा गोल्ड ले लेना है, राइट? सो दैट प्राइस फिक्सिंग कैन टेक प्लेस एट अ मार्जिन ऑफ अबाउट 8 to 10%. You should, in a healthy way, फर्स्ट फिक्स दैट प्राइस। सब्सिक्वेंटली जब आप वो ऑर्डर को बनाते हैं, हो सकता है आपको 200 ग्राम सोना 2 दिन में लेना है, 500 ग्राम बाद में लेना है, और अल्टीमेटली एक डेट पे आपको ज्वेलरी को बना कर देना है। तो हर एक टाइम जब आप वो फिज़िकल गोल्ड लेते हैं, आपको अपनी एक्सचेंज की पोजीशन सामने के सामने स्क्वायर ऑफ करनी चाहिए अगर आप कायदे से काम, हेजिंग का काम करना चाहते हैं। तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि अगर आपने कस्टमर को 1,48,500 रुपये में सोना बुक किया है तो आपको वही प्राइस रियलाइज़ होगा। आपका मार्जिन फॉर एग्जांपल 800-900 रुपये, 1,000 रुपये है तो वो सेफ़ रहेगा, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। ये तो हो गया फ्यूचर्स का मैकेनिज़्म। अब आता है ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर एक खासियत होती है कि आपको इंश्योरेंस कवर की तरह अपने आप का डाउनसाइड रिस्क जो है उसको प्रोटेक्ट करने का मौका मिलता है एक सिंपल प्रीमियम पे करके। और बहुत से ज्वेलर्स हैं जो कि लिस्टेड भी हैं कंट्री में, वो अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में ये लिखते हैं कि वो MCX पे इस तरह से अपना रिस्क मिटिगेट करते हैं। अगर आपने एक ऑप्शन खरीद ली तो चाहे वो प्राइस ऊपर जाए, आपके अगेंस्ट कोई मूवमेंट नहीं होगी, आपका जो लॉस है वो लिमिटेड और प्री नोन है टू द एक्सटेंट ऑफ योर प्रीमियम, एंड यू रिमेन प्रॉफिटेबल ऑन द अदर साइड। सो ऑप्शंस और फ्यूचर दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको यूज़ करना चाहिए। अपना कैपिटल जो है वहीं पे रखना चाहिए जहां उसकी ज़रूरत है, राइट? श्योर। ये अगर सब लोग अडॉप्ट कर लें तो इससे सबके मार्जिन्स चाहे भाव ऊपर नीचे जाएं, जैसे सुरेंद्र भाई ने बताया कि मंडे को प्राइस कहीं और खुल सकता है, इन सब चीज़ों से आदमी जो है दूर रहता है और चैन की उसको नींद भी आती है। सुरेंद्र भाई एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर मैं पैनलिस्ट का भी व्यू लूँगा इसके ऊपर। चांदी ने फिनोमिनल परफॉर्मेंस दिया है पिछले 1 साल में। मेटल्स फोकस 4-5 साल से कहती आ रही कि चांदी मार्केट डेफिसिट में है, ये सारी चीज़ें तो है, बट मैं आपसे एक चीज़ पूछना था कि चांदी का प्राइस क्या लगता है? क्योंकि हम सुनते हैं $150 हो जाएगा, $200 हो जाएगा। वेयर डू यू सी ओवर द नेक्स्ट 2-3 years सिल्वर गोइंग? 2026 मेरे हिसाब से चांदी, क्योंकि चांदी का इंडस्ट्रियल यूसेज तो है ही, अभी 60% चांदी इंडस्ट्री में यूज़ होती है, जो बढ़ने ही वाला है, 60 to 65 होगा, 70 होगा। चांदी इन 2026 कैन गो अप टू $95 to $105,
मीन्स ऑलमोस्ट 2,90,000 से 3,10,000 रुपए के बीच में. I would not like to give a view of next 3 years, but if you ask me view for the next, say by 2032, 2035, चांदी $500 हो सकती है. और गोल्ड अगर आप मुझसे पूछे 2032, 2035 तक क्या हो सकता है, गोल्ड शायद $18,000, $20,000 भी हो सकता है. सो यू बी केयरफुल. देखिए मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, जितने भी ज्वेलर उधारी में माल बेचते हैं, दे विल बी इन ट्रबल फ्रॉम 2027-28 ऑनवर्ड्स. दिस इज अ कमोडिटी, आप उधारी में नहीं बेच पाएंगे. और मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूँ कि सिर्फ एक मौका आएगा जब ये ताश के पत्तों की तरह सोने और चांदी का प्राइस गिरेगा. वो समय होगा जब बैंकिंग सिस्टम फेल होगा, लेकिन वो एक मोमेंट के लिए प्राइस गिरेगा. शायद 1 महीने के लिए गिरे, 3 महीने के लिए गिरे, वहाँ से इतना बड़ा जंप आएगा क्योंकि लोगों का जब बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होगा तो लोगों का करेंसी पर से विश्वास उठ जाएगा और लोग सब गोल्ड और सिल्वर की तरफ भागेंगे. जैसे हम लोग सुनते हैं कि जब इकोनॉमी फेल होती है कि टीसीएस कहता है कि मैंने 10,000 आदमी निकाल दिए, आज मैंने 10,000 आदमी को ले ऑफ कर दिया. आपको 2028-29 में देखने मिलेगा बड़े बड़े रिटेल स्टोर बोलेंगे आज मैंने 10 रिटेल स्टोर बंद कर दिए. ये होने वाला है इस इंडस्ट्री में. प्लीज बी केयरफुल. दिस इज माय रिक्वेस्ट एंड alertness to all the manufacturer and wholesaler. Stop selling goods on terms which are not favorable to you. Thank you. Yeah, that's an interesting view. If I know that Ranjit and Shivanshu cannot give a price forecast because they are part of the exchange, but Shweta and Rajan sir, I would like to have your view, maybe 1 year view on gold and silver. Where do you see? And then I'll give our house view of where do we see gold and silver as metals focus. Sir, another couple of years, gold and silver will be go on high rate only. But I request to our IBJA president for the looking that tier 2, tier 3 city Goldsmith, if I give them awareness program to how to buy the bullions and how to improve the bullions finance, so the customer flow will be there, more business will be there. So bullion dealers will be get the more orders. So now we are working under the BAS and MSME also. So if IBJA is one of the partners with us, we can do a lot because we are doing a central access inspection also. So again I'm telling the bullions we are getting 25 to 30%, we are getting the undercarriage only. But your price forecast, where do you see gold by December 2026? Prediction saying maybe another 2 or 3,000 will be a high yield, sir. $2,000 or $3,000. Yeah, No, ma'am. sir. Huh? Okay. Per gram. I okay. definitely see that by 2026 and 5,500 for sure. Okay. Yeah, Okay, dollar, perfect. 5,500 because Yeah. the way the like studying the overall market about how everything is working and how the retailers are also planning and how the targets of the retailers is also there. Like we have been working closely with a lot of corporates. We know how they are setting up their targets and understanding their growth and understanding how the import, FTA, duties, everything is taking place in the global market also. I think 5,500 till 2027 end, there is no major fall as of now what has been understood by the whole parameter. Yeah. So look, we expect $5,200 to $5,500 by end of this year. I think at this moment it's very difficult to take a negative view on gold given the global uncertainties that we are in. We also believe that probably demand will get impacted, but however, there will likely to be strong inflows from central banks. Central banks will continue to drive gold prices for another year or so. For silver, we are at about $105. We believe that silver prices over the next 12 months should see $105. Market is likely to be in deficit. However, if silver prices continues to go up, then you will see a bit of changes in the industrial demand. But I would like to open the floor to audience. We've got 5 minutes. If there are some questions, then the panelists would love to take them. Yes. Sir. Mike.
Hi. This is regarding this question is to Surendra Mehta, sir. Many of the central banks right now are building their reserves with gold. So one fine day, if American government feels like they feel that if the gold is the competitor for US dollar, if they want to sell out, since they got around some 8,800 tons of their reserves, what will be the impact on the price if American president wants to sell out around 200 or 3,000 tons of gold into the market? सर वो तो उनको बेचना ही पड़ेगा क्योंकि उनकी बैंक फेल होने वाली है और तभी प्राइस गिरेगा, लेकिन वो प्राइस गिरने के बाद आपका करेंसी पर से तो विश्वास उठ गया, नहीं होता। तो फिर आप खरीदेंगे क्या? आप कोई चीज खरीदते क्यों है? जब आपका दूसरी चीज से आपने गोल्ड का प्राइस बढ़ा क्यों? क्योंकि करेंसी पर से विश्वास खत्म होता जा रहा है, इसीलिए गोल्ड बढ़ रहा है। अगर बैंकिंग सिस्टम फेल होता है तो करेंसी तो फेल हो ही गई, इसीलिए बैंकिंग सिस्टम फेल हुआ, इसीलिए वो गोल्ड बेचेंगे और बेचना पड़ेगा उनको, और तभी गोल्ड का प्राइस नीचे आएगा, बट फॉर अ टेम्पररी पीरियड। प्लीज अंडरस्टैंड, कोई बेचेगा तो दूसरा खरीदने वाला सामने खड़ा है, उससे स्ट्रॉन्ग कंट्री खड़ी है सामने खरीदने वाली, इसीलिए प्राइस वापस बढ़ेगा। एक चीज मैं ऐड करूंगा कि सेंट्रल बैंक्स आर गवर्न्ड बाय, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज CBG, सेंट्रल बैंक गोल्ड अग्रीमेंट। अंडर सेंट्रल बैंक गोल्ड अग्रीमेंट आप ऐसा 3,000 टन आके नहीं बेच सकते, ठीक है? सेंट्रल बैंक गोल्ड अग्रीमेंट के अंदर ये एक 1990 में गाटा करके था, जहाँ पे सेंट्रल बैंक्स आके सोना बेच के चली जाती थी, तो एक अनरेगुलेटेड सेंट्रल बैंक्स आके सोना बेचती थी, ठीक है? गाटा के अंदर CBG अग्रीमेंट साइन हुआ। CBG अग्रीमेंट के अंदर आप अगर सेंट्रल बैंक है तो कलेक्टिव जितनी भी सेंट्रल बैंक से जो ये अग्रीमेंट साइन किया है, मैक्सिमम 500 to 600 टन ही बेच सकती है। तो ऐसा नहीं होगा कि 4,000 टन आके बेच के चले जाएगी, ठीक है? दूसरी बात समझनी जरूरी, जब सेंट्रल बैंक्स बेचती है या सेंट्रल बैंक्स खरीदती है तो वो ओपन मार्केट में नहीं आते खरीदने के लिए कि बेचने के लिए। A bank would deal with a bullion bank, a bank would deal with a central bank. ठीक है? So that's one thing. But if at all there is, see, one thing which you also appreciate कि 1,000 टन लास्ट 3 साल में सेंट्रल बैंक ने करीबन 800 से 1,000 टन खरीदा है, तो गोल्ड का भाव डबल हो गया है। अगर नेट सेलर्स हो गए सेंट्रल बैंक 800 से 1,000 टन या जो भी 600-700 टन बेचने लगे तो भाव नीचे भी आ सकता है। So see, that's one risk which will always be there, right? Given the fact that gold market is technically small, गोल्ड मार्केट कोई ऑयल जैसा नहीं है जो जायंट है। आप गोल्ड मार्केट अगर वैसे देखें तो ये बहुत ही छोटा मार्केट है, 4,000 टन है दुनिया का गोल्ड का सप्लाई। या देयर वाज अ क्वेश्चन। Shivanshu sir, I have a question for you. So the question is basically how can medium-sized jewelry wholesalers benefit from using MCX to improve their cash flows or profitability? And इसके दो context है basically. My father is a jewelry wholesaler. तो how he hedges is कि अगर 12 बजे ऑर्डर आया 1 किलो गोल्ड का, तो 12:01 पे वो वापस खरीद लेंगे 1 किलो गोल्ड फ्रॉम बुलियन, एंड that's how he hedges his risk in the business today. And most of the jewelers do like that only. And second is कि जब भी गोल्ड प्राइस का sudden volatility आता है या तो upwards या downwards, तो business सबका थोड़ा slow होता है because orders dry up हो जाते हैं. So ये fact का कैसे MCX का use करके jewelers like him can benefit? Right. No, I think the mechanism what you have already mentioned is sort of a back-to-back hedge, and traditionally that has how jewelers have been, buying for the full physical, booking the full physical gold against what has been sold. But होता क्या है कि देखिए futures and options आने से आप अपने इसी मॉडल को बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक 6 to 8% मार्जिन देके अपनी एक इलेक्ट्रॉनिकली आप अपने गोल्ड को ख़रीद सकते हैं। आपका कैपिटल ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि देखिए संसार में दो ही समस्या है, ऑर्डर है माल नहीं है, या माल है ऑर्डर नहीं है, राइट? सो कहने का मतलब है या तो आपकी इन्वेंट्री है जिसको प्राइस गिरने का डर है,
या आपको ऑर्डर तो मिल गया है, भाव चढ़ भी सकता है, जब तक आप उसकी ज्वेलरी बना के बेचें आपको वो शायद नहीं मिलेगा। तो इन दोनों टाइम गैप्स को और मेटल के गैप्स को हेजिंग के ज़रिए आप इसको फुलफ़िल कर सकते हैं। आप फ्यूचर्स में जितना आपको गोल्ड बुक करना है वो 6 to 8% टोटल M2M के लिए भी अगर थोड़ा रखते हैं 10-15% के अंदर आपने अपनी पोजीशन हेज कर ली, गोल्ड का प्राइस नक्की हो गया, ऑर्डर का मार्जिन फिक्स हो गया। अब आप जब जब उसका फिजिकल गोल्ड लेते जाएंगे एक्सचेंज की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते जाएंगे। ये आप फ्यूचर्स के थ्रू आप हेजिंग कर सकते हैं, राइट। और जहाँ तक ऑफसेट हेजिंग का सवाल है कि इन्वेंट्री आपकी जो पड़ी है, जो स्टोर इन्वेंट्री है, उसे आप वो उसमें क्या होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। डिफरेंट टाइप के लोग उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं। कई ज्वेलर्स उसको सेल करके चलते हैं, शॉर्ट सेल करके चलते हैं। कई ज्वेलर्स ऑप्शंस के ज़रिए पुट ऑप्शन ख़रीद लेते हैं मेरे अकाउंटिंग पीरियड के टाइम पे कि मेरा वैल्यू इंश्योर हो गई, चाहे 4,500 वाला गोल्ड जो है डॉलर की अगर मैं बात करूं, या 1.5 लाख रुपए वाला गोल्ड जो है वो 1 लाख भी हो जाएगा, तो मेरी इन्वेंट्री को मैंने 1.5 लाख पे हेज कर लिया पुट ऑप्शन ख़रीद के बाय पेइंग समथिंग लाइक ए 1% प्रीमियम। वो मेरा मैक्सिमम लॉस है। अगर वो गिर के 10% भी गिर जाती है तो मेरा लॉस उतना ही है जो प्रीमियम मैंने पे किया है। तो ये दोनों तरीक़ों से हेज, जो ज्वेलर्स हैं अपने आप को हेज करके चलते हैं। और हम ज्वेलरी एसोसिएशंस के साथ मिलके, जैसे IBJ हैं, हम हर एक नुक एंड कॉर्नर में इस चीज़ की अवेयरनेस को बढ़ाने की लगातार कोशिश करते हैं। और मैं समझता हूँ इस अवेयरनेस में बहुत सा इजाफा ऑलरेडी होता हुआ नज़र आ रहा है और ये आगे चलता रहेगा, ताकि हमारे फैब्रिकेशन मार्जिन प्रोटेक्ट रहें, इंश्योर्ड रहे, इंश्योरेंस की तरह। Perfect. So just one last question. We've got. Yes. You know, Chirag bhai, you spoke of silver price forecast, and we are speaking of industrial use, jewelry use. Silver Institute is talking of, supply deficits 4 or 5 years. Yes. I just want your comments on the supply deficit and what it will mean for the price. Yeah, so look, silver market has been in deficit for last 3 or 4 years. Roughly about, if I remember it right, 500 to 600 million ounces of stock has been reduced. बट आई थिंक एक चीज़ है कि मार्केट डेफिसिट में था और डेफिसिट में काफ़ी साल से था, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि सिल्वर में 25% सिल्वर ही खुद की माइन से आता है, 75% सिल्वर एसेंशियली लेड, जिंक, कॉपर, गोल्ड माइन से आता है। और लेड माइंस में काफ़ी सारी इश्यूज है, एनवायरमेंटल इश्यूज है। बट ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है कि सिल्वर के दाम क्यों बढ़े। अगर मार्केट 4 साल से डेफिसिट में, और हम तो 4 साल से कहते आ रहे हैं कि सिल्वर के दाम ऊपर जाने चाहिए, मार्केट में एक्चुअली जिसे हम कहते हैं टेक्निकल टर्म में डिसलोकेशन हो चुका है। नॉर्मली क्या होता है, कंज्यूमिंग मार्केट ईस्ट है, ठीक है, फ्लोज आते हैं लंदन हांगकांग से ईस्ट में जाते हैं, या फ्लोज आते हैं यूएस से ईस्ट में जाता है, ये यूएस से यूएस में रहता है, ठीक है। क्योंकि कंज्यूमिंग मार्केट्स वो मार्केट्स है जहाँ पे आइदर ज्वेलरी या ज्वेलरी मैन्युफैक्चर होती है, या सिल्वर वेयर कंज्यूम होते हैं, या इन्वेस्टमेंट डिमांड होती है, और या फिर इंडस्ट्रियल डिमांड, ठीक है। यहाँ पे 2 प्रॉब्लम हो गई। सबसे पहली प्रॉब्लम ये हो गई कि आपके अगर कहीं भी डिमांड आती थी तो लंदन से वो मीट होती थी, ठीक है। लंदन में जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है सारा ETF में बैक्ड। तो अगर ETF में वो स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो बाहर निकल नहीं सकता, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यूएस में लोगों को ये डर लगने लगा है कि यूएस सिल्वर पे टैरिफ लगा देंगे, ठीक है। US, there is something called as Section 232 ruling. Section 232 के अंदर ये है कि सिल्वर को एक स्ट्रेटेजिक एसेट बनाया जाएगा जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल सकेगा फिर, ठीक है। तो क्या हो गया है, जितना भी लंदन में दूसरा माल पड़ा हुआ था वो सारा निकल के कॉमिक्स चले गया, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये होगी कि दुनिया में डिमांड तो चल रही है, लंदन में माल टाइड अप है ETF में, कॉमिक्स में माल इसलिए पड़ा है कि लोगों को डर लग रहा है कि टैरिफ लग जाएगा तो वो माल बाहर नहीं निकल आ रहा है। और जो बचा कुचा माल जहाँ पे भी है, चाइना में माल पड़ा, हांगकांग में माल पड़ा है, जैसे अक्टूबर में इंडिया में एक्सप्लोड हो गई डिमांड, ठीक है। इंडिया इंपोर्टेड 7,000 टन्स ऑफ सिल्वर इन लास्ट ईयर, राइट। इंडिया सो एक्सप्लोजन ऑफ डिमांड, राइट। सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि डिमांड तो है बट इनफ अवेलेबल सप्लाई नहीं है। ऐसा नहीं है सिल्वर खत्म हो रहा है, ठीक है, ये नहीं है। सिल्वर मार्केट डेफिसिट में तो काफ़ी साल से अवेलेबल सिल्वर नहीं है। इसकी वजह से आपको दिखेगा हांगकांग में परसों $1.5 प्रीमियम चल रहा था,
जबकि इंडिया में अभी एक हफ्ते से डिमांड नहीं है, तो 50 सेंट 20 सेंट भी प्रीमियम चल रहा है, ठीक है, इशू है, और इसी वजह से आपको सिल्वर के दाम ऊपर जाते हुए दिखाई दिए. यू वांट टू आस्क वन क्वेश्चन बिकॉज यू बीन वेटिंग फॉर सम टाइम, बट वेरी क्विकली, आई थिंक वी used all our time. You can take this. Thanks, yeah. Thanks, Rag. Very nicely moderated. My question is for Ranjit sir. Ranjit sir, my name is Pratik from Almus. We help a lot of companies set up gold hedging desk and set up the entire hedging mechanism. Right. A lot of exporters, Yeah. dwellers, Yeah. while they cannot access the COMEX market, we understand that IIBX also provides a certain hedging mechanism. Can you please throw some light about the liquidity? How do we hedge? And is it only gold or any other metal that we can hedge through IIBX through an international at the international hedging rate? Right. See, as you know that currently hedging on dollar terms is not permitted, but by way of circular in 2022, RBI said he can do hedging of gold and silver. It's clearly it states any entity other than individual who have a exposure in gold and silver can do hedging on IFSC exchanges. Where we, as a IIBX, we have launched a gold kilo contracts that is equivalent to 32 trams, and we have launched a silver contract which is equivalent to 30 kg in dollar terms. Second thing is, if I'm an entity, you want to do a hedging in dollar terms, there were a lot of people who are using COMEX the other way to route. I don't want to mention that in this platform. They were accessing a platform dollar terms. Now I'm giving a access to dollar terms, that too in right way. Right now they were using two entities, one for the domestic exchange and another entity set up in Singapore or Dubai, they're different. So offsetting between two exchanges was not permittable. So what I'm doing is, like, if you want to access an IIBX, if I want to do hedging in dollar terms either in gold or silver, first thing is you have to approach AD Bank, whoever your AD Bank, that I want to do hedging on IIBX, I need a AD limit, the hedge facility limit. Once you have that limit, there'll be a special dollar account will be open, through which the dollar will flow from that dollar account to your trading member, which are based in GIFT IFSC, from member to exchange. The process is similar, which you works on domestic exchanges, but only thing you have to approach bank to get a limit first. After that, you can access the interest. Right about liquidity, we recently appointed a market maker who will be providing quotes on the two-way. He is going, I tell you honestly that he is giving a better rate, not as compared to other who are offering is a price. He is offering 3 layers of price, 3 lots each on one side, with only difference of bid and ask of 30 cents only. And right now we are charging nil transaction charges on exchange platform if you want to do hedging in gold or silver. Thank you. Thank you, Ranjit. Thank you very much. Thank you very much. And thank you to the panelists. Thank you very much, panelists. And what we have witnessed today is preparedness. And we are very thankful to the expert panelists who have real-time predicted the rates of gold and silver for the near future, and that is preparedness. And this happens only in platforms like the IAJS, Bharat Signature, and IAJS. So big hand to GJPC, ladies and gentlemen, for having put up this platform for the industry. Can I have the privilege to invite Mr. Shamal Poteji. Shamal Poteji, Director Exhibitions of IAJS Bharat Signature. Ladies and gentlemen, it is under his monitoring or his supervision that the industry gets platforms like this. Thank you very much, Mr. Shamal. Can I request you to give away a word of thanks and also remain on the stage for giving away a memento. Thank you very much. Thank you everyone and honorable members of the dais. Thank you for being here. I think, yes, he has already summed it well. These are platforms from where more people can understand and get knowledge, and we are more than happy to give this back to the industry. So once again, thank you for being here, and I hope you all enjoyed it, and we would like to have more feedbacks on what more sessions we can do both sides to bring in more transparency and good business in this industry. Thank you. Thank you very much, Mr. Pote. Can I request you to give away a moment of appreciation to Mr. Surendra Mehta. Ladies and gentlemen, for Mr. Surendra Mehta.
Thank you very much. Can I invite Mr. Mukesh Agarwal, Vice President, Hyderabad Jewelry Manufacturers Association on dais, please? Thank you very much, Mr. Shamal. Mr. Mukesh Agarwal, Vice President, Hyderabad Jewelers Association, to give away a moment of appreciation to Mr. Ranjit Singh. Thank you very much, sir, for coming in. Thank you very much, sir. Can I now invite Mr. Vinod Jain, Director V Chains, on stage, please. So Vinod Jain, requesting you to give away a moment of appreciation to Mr. Tirupati Rajan. Thank you very much, ladies and gentlemen. Let the round of applauses keep going. Today we have in real time got the prediction on the rates of gold and silver. Thank you very much, sir. Can I have the privilege to invite Mr. Chetan Thadeshwar, Chairman and Managing Director, Shringar House of Mangalsutra. Thank you very much for coming, sir. To give away a moment of appreciation to Mr. Shivanshu Mehta, MCX. Thank you very much. Can I invite Anand Parmeshwaran, head of our New Jeweler International Media Group, MENA Business Region, to come on stage, please? To give away a moment of appreciation to Ms. Shweta Dhanak. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Ms. Shweta Dhanak. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we are very, very privileged to have with us today Ms. Nirupa Bhatt, who's heading the IIGJ business on behalf of GJEPC. Can I invite you on stage, ma'am? Ladies and gentlemen, big round of applause for Ms. Nirupa Bhatt, who really needs no introduction. To give away a moment of appreciation for Mr. Chirag Sheth, and a heartfelt thanks on behalf of the New Jeweler Group to Mr. Chirag Sheth for having moderated this session. Big round of applause, ladies and gentlemen, to Mr. Chirag Sheth for having navigated this discussion today and getting it to a logical conclusion. Thank you, ma'am. Thank you, panelists. And a very, very good evening to all of you, and have a wonderful session till the end of the day. Thank you very much.